Hello dear students, I hope that you all are fine and you are doing your studies very nicely, effectively, sincerely. And in the last few classes we have discussed about the continuity and we have solved few questions related to this particular chapter, okay. And today we are going to discuss about a very new concept. It is called differentiability. What is the basic definition of differentiability? What is the basic concept actually differentiability is? We are going to discuss this particular concept and then we proceed with existence of derivative, okay. So to know this particular concept, you see I have a draw a graph of a function. This is the function y equal to what? Fx, okay. Y equal to fx is a function, okay. And take a point pxy on this particular graph of the function pxy. Then this is x coordinate and this is what? Y coordinate, okay. This is x coordinate, this is y coordinate. And suppose that the increment of x, earlier x is from here to here, this is the amount of x. Now x is increased by delta x. X is increased by delta x, but this delta x is a very small increment, okay. But here in figure I have shown in a larger way, but you have to think this is a very small one, very small one. Actually this x is greater than delta x. ये delta x एक बहुत छोटा सा है, बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है. जैसे मैं मान लेता हूँ what is delta x, suppose this is x1 and this is x2. तो x1 क्या होगा? This is x1, okay. This is x1 and this amount is what? x2. तो x2 minus x1 जो difference होगा, x2 minus x1, this difference is called delta x. This is called what? Delta x. And from here you see x2 is equal to what? x1 plus delta x. So this is x1 and this amount is x1 plus delta x. This x2 is what? x1 plus delta x. This is your x1. This amount is what? x1 plus delta x, and this small amount is called delta x. For feasibility to show the figure, I have little bit in a bigger way written delta x, but this delta x is what? This amount, which is a very small one, okay. It is a very small one. Now you see this is the coordinate x coordinate is increased by delta x, and we get ultimately it is x plus delta. Up to this level from origin to this it is x plus delta x. For suppose your function is y equal to fx. Function is what? Y equal to what? fx. So if x is replaced by x plus delta x, then we will get a value of y. We will get a value of y. Earlier what happened when this is x coordinate, this is y coordinate, okay. Now x is increased by delta x and therefore x coordinate becomes x plus delta x. So automatically there will be a y coordinate, and this y coordinate is, earlier it is what? Y, this amount, okay, and it is now another increment. An increment happened, okay. थोड़ा सा increment हुआ है. ये increment का नाम क्या है? Delta y. For this small delta x increment, corresponding increment in y is what? Delta y. And finally we get the point x coordinate is x plus delta x and y coordinate is what? Y plus delta y. That means when you put x equal to x plus delta x, this y will be replaced by y plus delta y. या यहाँ में जब x plus delta x हो जाएगा, तो x का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है delta x, तो corresponding इंक्रीमेंट y का भी हो रहा है, तो it will be replaced by y plus delta y. Okay. So this is the idea about this particular graph, okay. I hope you understand. This particular part is y, means this is also y. So finally this increment is delta y, okay. Therefore your original function is what? Y equal to fx. When I make an increment x by delta x, then there is a corresponding increment of y is what? Y plus delta y. So x function की x के जगह में x plus delta x put करेंगे, तो y की जगह में y plus delta y होगा, and this delta y can be written as, we can write like that, y plus delta y minus y cancel होगा तो delta y हो जाएगा, and this y plus delta y is what? F of x plus delta x, and this y is what? fx. Now delta x is an increment, so it is not a
it cannot be 0. It cannot be what? 0. It is a very small increment. So we suppose that it is non-zero quantity. Okay. So since delta x is a non-zero quantity, so we can divide left hand side by delta x, right hand side by delta x, and we get this in this expression. Now what is the meaning of this expression? This particular meaning, this is called ratio of increment of y with increment of x. Okay, ratio of increment of y with increment of what? X. Means y का एक small increment और x का एक small increment का क्या है? रेशियो ही है. नाउ ये जो रेशियो बन रहा है, ये रेशियो क्या होगा? आप एक चीज़ देखिए, दिस इज़ योर पॉइंट Q, दिस इज़ योर पॉइंट Q एंड दिस इज़ योर पॉइंट P. इफ़ वी थिंक दैट इफ़ Q टेंड्स टू P, Q अगर P में धीरे धीरे अप्रोच हो रहा है, Q is tends to P. Q is tends to P means what? Q is moving along the car. The position of Q is now here. For some time it is here. It is moving. तो क्या होगा? ये लाइन जो हो रहा है, ये आप ऑब्ज़र्व कीजिए, जितना Q नज़दीक आ रहा है, लाइन छोटा हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट हैपन? ये जो डेल्टा y है, this delta y is reducing, delta y is reducing, delta y is reducing, delta y is reducing. Understood? At the same time, what happened? Delta x, Q is approaching to P, then delta x is also reducing. Delta x पहले इतना था, अभी अगर Q का पोजीशन इधर मान लो तो this is your delta y and this is your delta x. That means delta y and delta x वो रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. पर्टिकुलरली वर्क क्या है? whenever Q is approaching to P, then this increment is reducing. छोटा हो रहा है, very smaller. At one's time, when it is very near to Q, that means delta x is reducing and reducing and reducing and reducing, and delta x almost tends to 0. Delta x almost tends to 0. So we can say that Q tends to P implies delta x tends to 0. Delta x tends to 0. When delta x tends to 0, we can get a small ratio. इसमें एकदम नज़दीक में एक y वो डेल्टा y मिलेगी और इसमें एक स्मॉल डेल्टा x मिलेगी और स्मॉल डेल्टा x मिलेगी, और ये जो डेल्टा y एंड डेल्टा x एक स्मॉल रेशियो मिलेगा. दैट रेशियो इज कॉल्ड लाइक लिमिट. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस रेशियो व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, del y by del x. This is also a ratio when Q is approaches to P, then at that time Q is very near to P. जब Q एकदम Q and P approximately equal हो जाएगा, at that time delta x tends to 0, and when delta x tends to 0 we get a small ratio, एक ratio limiting value of this ratio मिलेगी, and this ratio is equal to right hand side में इधर अगर limiting value ले लिया तो इस साइड में भी लेंगे, limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus fx divided by what? Delta x. Okay, this is the that is this particular expression is ratio of increment of y, ratio of increment of x, and this is also a ratio of increment of y with respect to x, but it is a very smaller one. When delta x is very tends to 0, almost there is no increment. ऑलमोस्ट देयर इज़ नो इंक्रीमेंट. अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है. और उस टाइम पे डेल वाई का एक इंक्रीमेंट, एक वाई का भी एक इंक्रीमेंट होगा जब Q एकदम P के नज़दीक आ जाएगा, वेरी वेरी नियर टू P, टेंस टू P. सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, वो जो एक नया एक्सप्रेशन हमें मिला है, दिस न्यू एक्सप्रेशन इज न्यूली डिनोटेड एंड नेम एज व्हाट? Differentiation of y with respect to what? X. What is the new name? It is called, this particular expression is called dy by dx. Okay, so it is also what? One type of, you can say, ratio between increment of y and increment of x. ये रेशियो क्या है? इतना छोटा रेशियो है. This is a very छोटा, very small ratio, and which is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus fx by delta x. Okay,
And this particular expression is also known as f dash x, and it is called differentiation of y with respect to x, or you can say differentiation of fx with respect to x, or in different way derivative of y with respect to x, or you can say derivative of fx with respect to x, because your function is y equal to what? Fx. So when you derive it with respect to x, तो left hand side क्या होगा? dy by dx, and right hand side क्या होगा? f dash x. So both are same. So definition of f dash x or dy by dx is limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus fx divided by delta x. Okay, and this is nothing but the small रेशियो, द वेरी स्मॉल रेशियो, बिकॉज डेल्टा एक्स जब एकदम नज़दीक चले जाएगी डेल्टा वाई भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये एक बहुत छोटा सा एक रेशियो, एक बहुत इंस्टेंट रेशियो होगा, और दैट रेशियो इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स. आप लोगों को फिजिक्स में मिला होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स सपोज दैट ए बॉडी यू आर अप्लाइंग ए समथिंग फोर्स, एंड उसका एक स्मॉल टाइम पे, वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी टाइम पे डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट हुआ. कितना हुआ? डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज देयर इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी, एंड इस लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंस टू जीरो मीन्स इसका मतलब है इतना कम टाइम में, जस्ट ए मोमेंट ऑफ टाइम, जस्ट ए मोमेंट ऑफ टाइम मीन्स दिस टाइम इज लाइक not a 1 second also, it is a something 1 by something 10 crore, like very moment of just a moment. Okay, for just a moment that particular displacement by time is called velocity. Okay, it is called what? Instantaneous velocity, and which is called ds by dt, जो आप लोगों को फिजिक्स में मिला था. So this is ds by dt, and this particular expression you can write in this expression limit delta t tends to f of what that is called y equal to s is a function of t. अगर आप s is a function of time, because displacement is a function of time, then it can be f of t plus delta t minus ft divided by delta t. This type of explanation आप लोगों को ये मिला था. तो वो जो मैं कह रहा हूँ ये इस टाइप का चीज़ है, ठीक है, इस टाइप का चीज़ है. इंस्टेंटेनियस एकदम वेरी स्मॉल रेशियो की, इज़ अ वेरी स्मॉल रेशियो. ओके, सो अल्टीमेटली डेल एस बाई डेल टी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो थोड़ा सा बड़ा रेशियो है, लेकिन जब टेंस टू जीरो हो जाएगा इट इज़ अ मोमेंट एंड वेरी स्मॉल रेशियो, एंड विच इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, सो फाइनली वी अंडरस्टैंड that what is dy by dx or f dash x. dy by dx or f dash x can be written as limit. हम ये डेल्टा x क्या है? एक स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ x है, और वी कैन नॉर्मली डिनोटेड डेल्टा x by h, बिकॉज रिपीटेडली डेल्टा x यू राइट इट विल कंज्यूम टाइम. सो ये डेल्टा x को हमने h मान लिया, तो आपका ये फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h minus fx divided by what? H. So this is the finally this is called what? Definition of derivative with respect to derivative of a function y equal to fx with respect to what? X, and defined like that. And this particular result is called डिराइवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. ये पहला डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है. ओके, एंड फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड ऑल द अदर स्टैंडर्ड डेराइवेटिव. एक्चुअली यू गॉट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट in your that is class 11 I think. So I just repeat it, that is what is the derivative of a function. So finally dy by dx or f dash x is limit h tends to 0, f of x plus h minus fx divided by h, where what is x? X are what? These x are belongs to the domain. Very important, x is belongs to the domain of the function. Okay, that means this is the derivative of a function at any point of its domain. Any point of its domain. Now, if the point is particular, if suppose a belongs to df is a particular point,
this fixed point, then what is the derivative? The derivative is defined as f dash a, means x के जगह में होगा और dy by dx at x equal to a particular point is equal to limit h tends to 0, just what will happen? X is replaced by what? A minus fa divided by what? H. So this is the definition of a derivative function at a particular point, and this is the definition at general point. Okay, कोई भी point में हो सकता है, and ये क्या है? एक particular point में definition of derivative है. So this two formula you have to write and you remember it. Let us will discuss about the existence of derivative at a particular point. Okay, like हमने continuity के बारे में चेक किया था. When a function is continuous at a particular point, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ता है. तो लाइकवाइज डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट होगा. कब होगा? व्हाट आर द कंडीशन? वी विल डिस्कस इन द लेटर हाफ. ओके, एंड बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इज dy by dx. ये जो dy by dx है, ये f dash x है, ये क्या है? What actually it? फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम अभी डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो व्हाट शुड बी द फिजिकल इंटरप्रिटेशन? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy by dx or f dash x. What is actually this meaning? What is this physical interpretation? Okay. Here in the you see in the figure. Okay. Again I draw a function y equal to what? fx. उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, and in this graph you observe that this is your graph. Okay. This is your graph of the function. Okay. Take a point here on the graph, and another point taken on this graph is what? Q. And earlier this is x coordinate, this is y coordinate, and this is what in small increment, this is x plus delta x, and this is what? Y plus delta y, and this amount is delta y. Okay. This amount is what? Delta y, and this amount is what? Delta x. ये क्या है? Delta x है. If I suppose then this is the line joining the points P and Q. ये जो line है दोनों कार्व की दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है. So this particular PQ, ये PQ क्या है? It is called chord. It is called chord or secant. It is named as what? Secant or chord. Chord के बारे में आप लोगों को पता है, जैसे सर्कुल एक कार्व है तो उसका ऐसा एक लाइन, इसको क्या कहते हैं? chord. These are the chord. These are the chord. So joining two points of the curve, we get a line and it is called chord. Okay. So here this is the curve, function का ग्राफ है, तो P पॉइंट और Q पॉइंट जॉइन करने वाला ये क्या है? chord है. I have extended it, दोनों साइड में एक्सटेंडेड किया है, and this chord ultimately makes an angle phi with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. So we know that if a line makes an angle phi or any angle with the positive direction of x-axis, then tan phi क्या होगा? स्लोप. किसका स्लोप? स्लोप ऑफ PQ. tan phi will be the slope of the chord PQ. ये जो PQ है उसका स्लोप क्या होगा? tan phi होगा. If this angle is phi, this line and that line are what? Parallel. So this angle, ये जो एंगल है ये बन रहा है, ये भी phi होगा. ये भी क्या होगा? phi होगा. Understood? एंड इफ़ यू कॉन्सिडर द राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है उसको आप अगर मान लें, क्या ट्राइंगल बन रहा है? दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज M, दिस इज डेल्टा x एंड दिस इज व्हाट? डेल्टा y, एंड दिस एंगल इज व्हाट? phi. दिस इज व्हाट? phi. देन फ्रॉम द फिगर इट इज़ वेरी क्लियर दैट tan phi इज इक्वल टू व्हाट? del y by del x.
and tan phi is nothing but the slope of the chord joining the point P and Q. Okay, that means this ratio of increment of y with increment of x representing what? Representing what? Slope of the chord joining the point P and Q. Slope of the chord joining the point P and Q. Very interesting. Okay, so this is what dy by dx, del y by del x is nothing but tan phi. It is what? Tan phi. From figure, geometrically we prove that it is what? Tan phi. Tan phi is the what? Del y by del x. That means small, the increment of y with respect to increment of the ratio we get, that ratio represent what? Slope of the chord joining the point P and Q. Now very interesting is that when Q tends to P, Q tends to P, मतलब है Q is moving in this along the curve. When Q is very near to P, already we proved that जब Q एकदम P की नज़दीक हो जाएगा, that means the point Q and P are same point, almost same हो जाएगा, एक ही point हो जाएगा. उस टाइम पे क्या हो रहा है आप फिजिकली देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. डेल्टा एक्स क्या हो रहा है? टेंस टू 0 हो रहा है, क्योंकि डेल्टा एक्स भी रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होके अल्टीमेटली इट इज़ ऑलमोस्ट टेंस टू 0. उसका जो लेंथ है, वो जो इंक्रीमेंट है, वो इंक्रीमेंट रिड्यूस होके ऑलमोस्ट टेंस टू 0. एंड एट दैट टाइम आप अगर थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन कर ले, सो दिस इज़ योर कॉर्ड, राइट? दिस इज़ योर कॉर्ड. थिंक दैट दिस इज़ योर कॉर्ड. जब Q पॉइंट इधर आएगा तो लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा. लाइन विल बी दिस, तो लाइन ऐसा रोटेट होगा, फिर द पॉइंट विल कम हियर और थोड़ा रोटेट होगा, एंड देन इन दिस वे वो लाइन को मैं रोटेट करना पड़ेगा, बिकॉज रोटेट करेंगे एट वंस टाइम. जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये लाइन क्या हो जाएगा? ये जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड बिकम्स अल्टीमेटली टेंजेंट. जब Q पॉइंट बिकम्स व्हाट? P, Q इज़ ऑलमोस्ट P हो जाएगा, तब जाके ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये लाइन, ये जो कॉर्ड, ये कॉर्ड क्या बन जाएगा? एक टेंजेंट हो जाएगा. इट बिकम्स अ टेंजेंट एंड इट विल टच द कर्व इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ ये पर्टिकुलर कॉर्ड बिकम्स द टेंजेंट, ये टेंजेंट हो जाएगा एंड इट विल टच द कर्व ओनली. इट विल टच द कर्व व्हेन Q टेंस टू व्हाट? P. That means when Q tends to P means delta x tends to 0. That means the chord becomes tangent. That means what happen? आपका जो एंगल फाई है, ये फाई क्या होगा? धीरे धीरे जब ये पर्टिकुलर कॉर्ड इधर मूवमेंट करेगा तो एंगल फाई इधर मूवमेंट करेगा. दिस फाई बिकम्स क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. सपोज इट एंगल इज थीटा. वी सपोज दैट टेंजेंट मेक्स एन एंगल थीटा with the what? Positive direction of x-axis, and when this chord PQ is approaching to P, then this chord becomes the tangent, and then phi becomes what? Theta. Phi becomes what? Is very interesting. You have to understand this particular part. Okay. That means Q tends to P means delta x tends to 0 means phi tends to theta. मैं कोशिश की आप लोगों को समझाने के, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि ये कॉर्ड क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट हो जाएगा. दैट मीन्स कॉर्ड जब इधर मूवमेंट होगा, इससे मूवमेंट होगा, तो एंगल धीरे धीरे इधर शिफ्ट होगा एंड फाइनली बिकम्स व्हाट? फाई बिकम्स व्हाट? थीटा. मीन्स वी कैन से tan फाई, दोनों में अगर 10 लिया जाए, बिकम्स व्हाट? tan थीटा. Becomes what? Tan theta. So very interesting. When Q tends to P, chord becomes tangent. At that time delta x tends to 0 and tan phi becomes what? Tan theta. Tan phi is the slope of the chord PQ and tan theta is the slope of the tangent, because slope of the tangent at P, slope of the tangent at what? P. So tan theta is the slope of the tangent at what? P, because this tan theta makes an angle theta with the positive direction of x-axis, and therefore we can say that tan theta is the slope of the tangent at P and tan phi is the slope of what? PQ. That means what happened? We can say that when Q tends to P, at that time delta x tends to 0, and when delta x tends to 0, slope of PQ chord becomes slope of tangent, Okay.
Now comes to here in using the calculus. Okay, so when you take limiting value here, limit delta x tends to 0, it is del y by del x is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus fx by delta x, ये एक्सप्रेशन होगा. एंड दिस एक्सप्रेशन व्हेन डेल्टा x टेंस टू 0 means q tends to p means this particular expression del y by del x means tan phi becomes what? Tan theta. Okay, so we can write this particular expression, ये जो particular जो expression है, when we take limiting value it becomes what? Tan theta. It becomes what? Tan theta. It becomes क्या हो जाएगा? Tan theta. अर्लियर क्या था? ये tan phi था. जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो गया, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो गया तो tan phi becomes क्या हो गया? Tan theta हो गया. And tan theta is the slope of the tangent. Tan theta is what? Slope of the what? Tangent. Okay. Tan theta is the what? Slope of the tangent. But in earlier definition we know that limit delta x tends to 0 del y by del x, which is called what? dy by dx or f dash x. And physically is in geometrically we prove that this quantity is tan theta. This quantity is tan theta, means slope of the tangent. And earlier we know that limit delta x tends to 0 del y by del x is what? F dash x. So what is our conclusion? Tan theta equal to क्या बनेगा? F dash x or dy by dx. Okay, so our conclusion is that this f dash x and dy by dx are nothing but tan theta. Nothing but what? Tan theta. And what is tan theta? Slope of the tangent at what point? At the point xy. At the point what? xy. That means what happen? और ये point P में हमें एक ही टेंजेंट मिल रहा है, यूनिक टेंजेंट. We get what? At P we are getting what? Unique tangent. Very important. हमें क्या मिल रहा है? एक ही टेंजेंट मिल रहा है. That means f dash x or dy by dx at a particular point xy. If you say xy is a particular point, then on that particular point we are getting a unique tangent. Okay. And ये यूनिक टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप क्या है? f dash x है, dy by dx है. So geometrical interpretation of dy by dx or f dash x is it represents the slope of the tangent at the point xy. Okay. Finally we can say that. Final conclusion, dy by dx or f dash x ये क्या है? Slope of the tangent at the point pxy or xy, at the point xy on the curve y equal to fx. और स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन्स टेंजेंट का तो एक ही स्लोप होगा बिकॉज टेंजेंट आर मेकिंग एन ए पर्टिकुलर एंगल विद द कोड दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये पार्टिकुलर टेंजेंट का एक ही स्लोप होगा और स्लोप एक ही का मतलब है एक ही टेंजेंट होगा. दैट मीन्स व्हाट हैपन? dy by dx का जो वैल्यू होगा कोई भी वैल्यू में निकल के हाफ हो जाए या 2 हो जाए 1/3 हो जाए, जो भी हो वो वैल्यू क्या होगा? ये पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगा? एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप होगा. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स dy by dx, इफ अगर मैं कहूँ dy by dx और f dash x एग्जिस्ट, उसके बाद एग्जिस्ट का मतलब क्या है? आप जब मैं कहूँगा dy by dx और f dash x एग्जिस्ट तो आपको दिमाग में आना होगा कि ये कार्व के ऊपर कोई भी एक फंक्शन की कार्व के ऊपर क्या होगा? दिस इज़ द कार्व. सपोज कार्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, इसमें अगर एक पॉइंट मान लो, इसमें अगर एक पॉइंट मान लो, इसमें अगर एक पॉइंट मान लो, नो सो मेनी पॉइंट्स आर देयर. सो एवरी पॉइंट में एक टेंजेंट मिलेगी, इसमें भी एक टेंजेंट मिलेगा. हाँ, ये अगर इधर ले आओ तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल करेगा, दिस इज एंगल मेक. ये अगर टेंजेंट ड्रॉ करो सो दिस आर इट्स आर ऑल्सो मेकिंग एंगल. सो टेन थीटा ये स्लोप मिल रहा है.
इसका मतलब है एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, दिस मीन्स व्हाट, कार्व के ऊपर ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ, जो पॉइंट में डी वाई बाई डी एक्स होगा, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट आएगी, ये टेंजेंट क्या होगा, यूनिक होगा, बिकॉज एक ही पॉइंट में एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें पता है, अपने स्कूल में मिला है, जैसे आप कार्व दिस है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ओनली वन टेंजेंट का मतलब है ये एक एंगल करेगा, टेन थीटा होगा, एंड टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, सम पर्टिकुलर रियल नंबर होगा, एंड व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स। दैट मीन एफ डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा फॉर ए पर्टिकुलर थीटा, इट विल बी यूनिक वैल्यू, एफ डैश एक्स विल बी यूनिक। अगर आपको लग रहा है कोई भी एक पॉइंट में एफ डैश एक्स का वैल्यू एक्स से ज़्यादा हो रहा है, सपोज एफ डैश एक्स का वैल्यू मिल गया हाफ, 2, 3, ऐसा कुछ वैल्यू मिल गया इन ए पॉइंट, तो आप डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट आप नहीं कह सकते, डी वाई बाई डी एक्स एंड एफ डैश एक्स इज नॉट एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स मीन्स दैट इट मस्ट हैव ए फाइनाइट वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू। तो एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट होने का मतलब है उसका वैल्यू फाइनाइट होना पड़ेगा और एक यूनिक वैल्यू होना पड़ेगा, बिकॉज फॉर ए पर्टिकुलर थीटा टेन थीटा इज यूनिक। जैसे सपोज 45 डिग्री, तो 10-45 डिग्री तो 1 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली एफ डैश एक्स का वैल्यू एक ही आ रहा है फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट में मैंने दिया वो ये 45 डिग्री सपोज हो गया, तो आपका टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, एंड इट इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, फाइनाइट एंड यूनिक, ओके, एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट। जब डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट, आपको दिमाग में यही आना चाहिए कि कार्व के कोई भी एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट मिलेगी। 2-3 अगर टेंजेंट मिल जाए कोई भी एक पॉइंट में, तो आप डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ये आप मान लें, ठीक है।